Now we'll see the applications of Bernoulli's principle. Applications of Bernoulli's principle. So, matlab we are using basic Bernoulli's principle only, but different instruments we will see. Okay. First one is Venturimeter. Venturimeter. So what is the purpose of Venturimeter? Venturimeter का क्या purpose है? Anything? पूछा? Venturimeter का purpose, function क्या है इसका? Okay. देखो Venturimeter का purpose क्या है? To measure the rate of flow. Rate of flow or velocity also we can calculate anywhere, any point where we can calculate the velocity also by using this instrument. देखो Venturimeter is a device used to measure the rate of flow. मालूम है rate of flow मतलब area into velocity वाला. Rate of flow, or we call as discharge, or we can calculate velocity also for a non-viscous incompressible fluid flowing through a pipe. देखो this is the Venturimeter. If you want to suppose I want to know the rate of flow. See बहुत important है, हम लोग सोचेगा rate of flow क्यों चाहिए क्या है बोल तो we can control the pipes का flow. Sometimes they want this much only कम आने का, ज्यादा ज्यादा भेजने का, कम भेजने का. They'll tell rate of flow इतना balance करो बोले तो we can see the rate of flow and we can control the rate of flow. Okay, so this is the instrument. Venturimeter का ये instrument है, ऐसा shape है. Okay, and here tubes open to the air, tubes are there, and इसमें पानी जा रहा है. Okay, पानी जा रहा है. पानी जाने समय you tell me it is going, इसका area A1 है, इसका area is A1, इसका pressure at this point is P1, and मान लो height H1 and this is H2 height है. Okay, and this point का pressure is P2 and इसका velocity is V2. Okay, and इसका velocity here is V1 and area is A1. here area छोटा area. You tell me velocity किसका ज्यादा है? किसका ज्यादा है velocity? A2 V2 V1? किसका velocity is more? By equation of continuity we know that area is inversely proportional to velocity. Okay, A2 का velocity मतलब V2 is का velocity is more. If V2 is more, pressure क्या होगा? Less. Less. That means that's why पानी का level got less here. पानी का level is more. So V2 is greater than V1 and P2 is less than P1. And here area A2 is less than A1. Right? So that's why पानी का level है ऐसा हुआ. And the difference of the heights is important for us. Difference of height is important for us. Our intention is to find the rate of flow. Rate of flow means volume flown per second. एक सेकंड में कितना volume flow हो रहा है, rate of flow. Area and velocity will give the rate of flow per second में. Okay. Now ये इंस्ट्रूमेंट है, अमेजोन में आप वेंचुरी मीटर बोल के लगाए तो ये ऑर्डर कहते हैं आएगा, ऐसे इंस्ट्रूमेंट रहेगा, इतना बड़ा रहेगा. We can fix the tubes and wherever pipe में water is flowing, we can fix that Venturimeter through ये fix करेगा, ये भी fix करेगा दूसरा पाइप से करंट बीच में लगाने का. That's it. एक पाइप का दोनों पाइप ज्वाइन करने समय ये वाला इधर एंड ये वाला उधर एंड फिक्स करके वो टाइट कर देगा, खत्म. रेट ऑफ फ्लो से वी कैन कैलकुलेट. Okay, that is the function of the Venturimeter का. Just running, sir, do I need to draw a diagram? Yeah, diagram important है. Okay, basic तो मतलब इतना कलर का जरूरत नहीं है, नॉर्मल ड्रॉ करो आउटलाइन. Now इसका we are interested to calculate the yeah.
Yes, sir. Now better? Yeah. Yes. Chalo. Now we are interested to calculate the rate of flow or velocity of the fluid also we can calculate. See velocity आ गया तो क्या होगा, area into velocity we can multiply simply, right? Okay. So हम लोग क्या करेंगे, सेम बर्नौलीज प्रिंसिपल देखो, दे आर एट हॉरिजॉन्टल लेवल में, हॉरिजॉन्टल लेवल में हाइट इज सेम, मतलब हाइट का एक्सप्रेशन विल बी गॉन, okay, and velocities will be there, areas will be there, right? So pressures will be there. So we are calculating the first we'll use the equation of continuity use करके we are trying to find, देखो we are eliminating v1, we are eliminating v1, that's why v1 is equal to लिख रहे हैं, we are substituting in the Bernoulli's में, so that v1 is eliminated, we can find the velocity at v2. Our intention is to find rate of flow at this place, so v2 find करके we have to solve, right? देखो equation of continuity I told you, mass conservation है, a1 v1 is equal to a2 v2. I am applying for these 2 points, first point, second point, and v1 is equal to For calculating the rate of flow. rate of flow. Tell me, for calculating the rate of flow only we are using these all things now, ek ka we are using. Now we'll apply the Bernoulli's principle ka. Bernoulli's principle because it's application, right? Bernoulli's principle use करके we'll apply the equation. देखो Bernoulli's equation. What is the equation at 2 points? P1 plus half rho V1 square is equal to P2 plus half rho V2 square. And I brought this all things. P1 minus P2 equal to half rho into V2 square minus V1 square. I have to eliminate V1 because I want to find V2, right? So V1 के जगह में I am substituting A2 by A1 into V2. ये square है ना, square करने वाला है, and V2 square बाहर ले लिया. Okay, half rho V2 square into 1 minus A2 square minus A2 square by A1 square लिखो ये तक. Now pressure difference also will calculate, substitute, and we'll get the velocity V2. If you get velocity V2, we get the rate of discharge, rate of flow we can get. Yes, done. Okay. Can you tell me what is the pressure P1 here? A height H1 है, a height H2 है. What is the pressure P2 here? Tell me. A ऊपर atmosphere pressure है, P atmosphere pressure P naught. So what is the P1 pressure bottom में? क्या होगा? P naught P naught plus plus rho H1. rho GH1. Rho GH1. Here P naught plus rho GH2, right? Okay. So now I will subtract that one and P1 minus P2 के जगह में I will substitute. देखो P1 is equal to P naught plus rho GH1 and P naught plus rho GH2. I brought this one P1 minus P2. I got rho G into H1 minus H2. And what is H1 minus H2 is nothing but H. I substitute H. Now इसके जगह में I am substituting. देखो इसके जगह में I am substituting this one rho GH is equal to half rho V2 square into 1 minus A2 square by A1 square. And now rearrange करो. रो कैंसिल करो, रीअरेंज करके we get V2 आ गया. देखो अंडर रूट 2GH by 1 minus A2 square by A1 square is the formula. वेलोसिटी अगर चार्ज चाहिए बोले तो क्या करेंगे, रेट ऑफ फ्लो चाहिए बोले तो क्या करेंगे, इसमें
एरिया इंटू वेलोसिटी, राइट? एरिया इंटू वेलोसिटी कौन सा? v2 का है ना, एरिया इज a2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी दिस वन. If you take LCM and if you bring this side, this is a formula to add. This formula and this formula to add. Q equal to A1 A2 under root 2GH by A1 square minus A2 square is the formula for this one. Rate of flow and velocity का formula under root 2GH by 1 minus A2 square by A1 square. अगर V1 है तो 1 minus A1 square by A2 square आएगा. Okay. So V2 is the मतलब initial point, final point. Final point का velocity we can find by using this formula. Under root 2GH by 1 minus A2 square by A1 square. See, application समझो, मतलब that formula that they can give and that will do the problems based on this. But understand, further also you should be able to apply the pressure, Bernoulli's equation, equation of continuity, and where to solve. Then One so second. formula बैठ करो, Elask, Krisha Elask बैठ करो. A1 A2 under root 2GH by A1 square minus A2 square is the formula for rate of flow, and rate of flow will be same everywhere always. H is I what? can Very directly important. use this formula. Yes, we can use directly the formula. V2 can rate of flow ka maximum. See, if you can by heart this one, you can find velocity. How to find velocity? Divide with that area. मतलब divide with area कहते क्या होगा? मतलब A1 A2 का निकाल देते क्या होगा? Directly will get, see, Q is equal to A2 V2. From this V2 is equal to how much? Divide with that particular area, you will get the answer velocity. Rate of flow का भी याद है तो बस है. And rate of flow will be same everywhere, right? Because उसके accordingly it will change, right? Formula will change, right? उसके accordingly. Area ज़्यादा है, velocity will come. And उधर area कम है, velocity is more. So based on that, everything will be matching. Rate of flow will be same. A1, A2 under root 2GH. H is what? The difference between the height. That is important. Difference between the height. All important. Okay? That's अब what बोल सकते हो कृषा? Formula? Tell me. Q का formula tell me. A2 root 2GH by A1, 1 A2. minus. हाँ. अब बोलो. Sir, A1, which A2 one? into under root. A1 A2 into under root 2GH by A1 square minus A2 square. हाँ, very important. Okay? चलो. Next. आपको कंक्लूजन्स के लिए आपको देखो व्हाट इज द कंक्लूजन वी गॉट हियर. P1 माइनस P2 के जगह में रोजेस लगा के एंड हियर सिंप्लीफाइड मॉडल देखो आपको V2 स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस 2GH ये भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. सपोज इन क्वेश्चंस में आपको वेलोसिटीज आर नॉट गिवन, देखो सपोज एरियाज आर नॉट गिवन टू यू, एरियाज आर नॉट गिवन, हाउ टू फाइंड वेलोसिटी? यू नो द फार्मूला राइट, अंडर रूट 2GH by 1 minus A2 square by A1 square करके वो कर सकते हैं, बट A1 A2 नहीं देगा. दैट टाइम क्या करेगा? We have to use directly V2, the velocity, छोटा area का velocity is equal to V1 square plus 2GH. Directly you can use. Why? How we got this one? ये दो equation use करके. Rho GH use करो इधर. Rho GH use किया तो क्या होगा? सबसे क्या तो क्या होगा? Rho GH is equal to half rho V2 square minus V1 square. So rho cancel. 2GH and ये वाला आए तो V2 square is equal to V1 square plus 2GH. So directly areas are not given in Venturimeter में directly you can use this one. V यही फॉर्मूला है ना, V square equal to U square plus 2AS जैसा same thing. V2 square is equal to V1 square plus 2GH we can use directly in Venturimeter में. And other things we know already. V2 we know and rate of flow also you know. These are the formulas we'll use. Whenever areas are not given directly use this one. V2 square is equal to V1 square plus 2GH. H is the difference of heights in the U shape वाला ट्यूब में, that should open to the atmosphere in this case में, right? चलो न्यूमेरिकल्स करेंगे based on this. Clear? What was the previous formula? V1 square equals to V2 square plus 2GH. 2GH.
V2 square equal to V1 square plus 2GH. एक ही यूज करो हो जाएगा. When Yeah, areas are not given. हाँ चलो हाँ करो. Answer I want in centimeters per second. Answer. See, when you're using H ka, G is there. G is in meters per second, right? So try to convert meters per second. Last my answer should be in centimeter per second. Yes, sir. Sir, I got 70. You will see. So 10 meter per second will be 1000 centimeter per second then, right? How much? Sir, 70. Yes, So will 70. 10 meter per second be 1000 centimeter per second? 10 meters per second is 1000 centimeters per second. See, you first you convert all in meters per second. Answer कितना है बोलो? V2 square is equal to V1 square plus 2GH. Yeah, so you'll get y square is equals to. Oh wait, I did a conversion mistake. Yes, sir, 70. Yeah. Next one. क्या करो? Now here open नहीं लगा रहा हूँ. ये एक mercury का tube लगा रहा हूँ inside. So here also difference will be there, right? For difference of height, water flows through a tube. The areas are given to you. The rate of flow, Q also values are given. Find the difference of mercury levels in the tube. मतलब height H we is telling to find. ये height H is कितना है? Difference of the height. Sir, I got 0.9. We'll see. Sir, 1.2. So 1 second. हाँ, we'll देखेंगे. Oh, so wait, no, 1.2, yeah. The difference of mercury level means they're asking H. height, right? Height. Like manometer is a high difference of height like OH. So Q दिया तो Q का फॉर्मूला यूज करो डायरेक्टली आ जाएगा. Oh, 1.2 meters, yeah. Yes, this answer 1.2 meters. Okay, चलो. Now, Pitot tube.
सी पिटॉट ट्यूब कुछ नहीं है, जस्ट वो भी वन ऑफ द एप्लीकेशन है. देखो दिस इज अ पिटॉट ट्यूब. सो एक परपेंडिकुलरली राइट एंगल में फ्लो ऑफ फ्लूइड, आपको स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड फाइंड करने के लिए ये वाला पिटॉट ट्यूब विल बी यूजफुल. ये बेंड करके वाटर फ्लो का परपेंडिकुलर वी आर पुटिंग, and the tube is at rest. Tube is at rest. That means here I am putting velocity of the beam is always zero. In pitot tube में the velocity of the B is zero. Now can you tell me find the velocity? Find कर सकते हो ये वाला. मान लो इसका height है h capital H and ये h है and ये वाला भी इधर से इधर तक h है ना. Total height will be h plus h. Okay, can you find the velocity of the speed of the particle by using Bernoulli's? सेम हॉरिजॉन्टल, हाँ देखो ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, हाइट डिफरेंस नहीं है. अप्लाई द बर्नौली's प्रिंसिपल एंड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड. अप्लाई करो. So what's the difference between this and the Venturimeter? सी Venturimeter is used to get the rate of flow of the complete pipe में, मतलब उसमें पाइप में रेट ऑफ फ्लो क्या है, टू मेजर स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड. कंप्लीट स्पीड डायरेक्टली विल गेट. आपको रेट ऑफ फ्लो करके डिवाइड करने से अच्छा आपको डायरेक्टली रेट ऑफ फ्लो स्पीड में आ जाएगा डायरेक्टली. मतलब पाइप लगाओ, बाय सीइंग द डायमेंशन वी कैन टेल द स्पीड ऑफ द फ्लूइड, और भी इजी हो जाएगा थोड़ा कैलकुलेट करने से. ओके, हाँ. नाउ टेल मी अप्लाई बर्नौली's प्रिंसिपल एंड ट्राई टू टेल मी द वेलोसिटी कितना आएगा. सो अप्लाई करो हियर एंड हियर, हियर एंड हियर. डेंसिटी रो है and velocity is v. Tell me pa plus half rho v square is equal to h तो गया ना, सेम लेवल है ना, हाइट इज सेम. सो pb प्लस इसमें कितना होगा, हाफ रो v स्क्वायर. v ऑफ b इज जीरो, राइट, जीरो हो जाएगा. तो मैं बिकॉज the tube is at rest, the particle at that b is always zero. when the touch कर गया वो velocity will be zero. that point pitot tube में always ऐसे लेने का. now आपको डिफरेंस ऑफ प्रेशर ले लेंगे एंड फाइंड द वेलोसिटी v, राइट. सो क्या करेंगे, pa माइनस pb ओके इज इक्वल टू माइनस हाफ रो v स्क्वायर, और बेटर आई विल शिफ्ट दैट साइड. pb minus pa half rho v square. So therefore v is equal to under root 2 times of pb minus pa by rho. Okay, what is pb minus pa? Tell me. इधर प्रेशर मतलब बॉटम ये प्रेशर a एंड प्रेशर b में. टेल मी pa सेपरेटली फाइंड करो, pb सेपरेटली फाइंड करो एंड सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा इधर. pa कितना है इस लेवल से, p नॉट प्लस रो जी एच. Yes, sir. एंड हियर pb कितना होगा, p नॉट प्लस रो Rho जी G small h. h प्लस h. हाँ, ये सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, रो जी एच आएगा. इफ यू सब्ट्रैक्ट pb minus pa you'll get rho gh. So substitute here. So will v is equal to under root 2 times of rho gh by rho. So rho cancel. So velocity of the fluid is under root 2 gh. h क्या है, difference of the height. Difference वो difference of height लेके we can directly use this formula under 2gh. It is easy than Venturimeter का. But Venturimeter they will give means you have to go for Venturimeter method से करो. But normally practical application में pitot tube is easy to measure. Under root 2gh directly करेगा, that's it. वो So लोग is it Venturimeter always under root 2gh? हाँ Is it always under root 2gh? हाँ yes, under root 2gh in this when the liquids में under root 2gh always. Okay. Okay. चलो. Let me write it down. Yeah.
सो पिटॉट ट्यूब इजी है, जस्ट एल बेंड है विच इज परपेंडिकुलरली बेंड लगा के वो हाइट डिफरेंस देके अंडर 2 GH लगाओ, खत्म, विल गेट द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल. Yeah, so done. Yes. So what is the point of writing the v is equals to root of that part? नहीं डेरिवेशन किया, that's it. अंडर 2GH. I'm not derivation, sir. हाँ Derivation नो of राइट. हाँ सी मतलब ये डायरेक्ट कैसा है बोल के डाउट आएगा. अंडर 2GH इज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी राइट, अंडर वो फॉर्मूला है ना, ये कैसा आएगा बोल के समझ में आएगा. ओके चलो, these are all applications of Bernoulli's only. Next, Torricelli's theorem. This is also one of the application of Bernoulli's only. Torricelli's theorem. Okay. So ये क्या किया, Torricelli's theorem याद है कुछ? Torricelli's theorem सुना होगा ना? So then that guy only make नहीं, Torricelli's theorem क्या है? सपोज एक वेजिल है, एक स्मॉल होल बनाया वो वेजिल को, सो पानी फुल भर के है, वो स्मॉल होल गया तो क्या होगा, पानी झुम झुम बोल के आएगा ना. ओके, दैट स्पीड फॉर्मूला इज गिवन बाय टॉर्सलिस. the कुछ काम नहीं है barometer मतलब. also by this guy only, no? हाँ Barometer. हाँ बैरोमीटर, हाँ टॉर्सलिस बोल गया. ओके, मे बी दैट पर्सन ओनली, बट ही हैज गिवन द फॉर्मूला, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द कंटेनर. इट कैन बी टॉप, इट कैन बी बॉटम, इट कैन बी एनीवेयर. वो छोटा सा होल मारने से कितना स्पीड से पानी आएगा, दैट वैल्यू इज गिवन बाय दिस टॉर्सलिस, एनी कंटेनर, क्लोज कंटेनर में. ओके देखो, सो व्हाट इज द थिंग इज स्पीड ऑफ एफ्लेक्स बोलते हैं. एफ्लेक्स मींस the velocity with which the liquid emerges from the hole at the bottom of a tank. कितना velocity से आ रहा है ना, that is called speed of efflux बोलते हैं. Okay, they will tell to exam में, they will tell to calculate speed of efflux, मतलब speed with which the container hole से पानी आ रहा है, that is called speed of efflux, is the same as the velocity acquired by the body by the freely falling through a vertical height equal to the depth of the hole below the surface of the liquid. देखो, if I drop an object from a height h, what is the velocity with which it hits the ground? Tell me, what is the formula? Velocity of the body with which hits the ground. Kinematics Root में 2GH. root 2GH is the formula. He told the velocity anywhere लगाओ, the container में किधर भी hole बनाओ, वो पानी जो भी आएगा, the velocity का formula is under 2GH only. And h is what? Surface है where the hole is there. That height, depth is nothing but the is the torsiless ना बोल रहे आप. देखो, suppose ए हाइट एच कंटेनर है, इधर एक स्मॉल एरिया ए बनाया, होल एरिया ए बनाया. ओके, सरफेस से कितना हाइट है, सरफेस से हाइट इज एच हाइट में. होल बनने से क्या होगा, जूम बोल के आ रहा है ना, वेलोसिटी से बाहर आएगा ना. ओके, दैट वेलोसिटी का फॉर्मूला इज अंडर रूट 2GH. एच क्या है, सरफेस से द होल का डिस्टेंस, वो हाइट को वी कॉल्ड एज एच. ओके देखो, this is a formula, v equal under root 2GH is a formula. Velocity of efflux बोलते हैं, they will tell simply velocity of efflux, speed of the fluid leaving the hole, and acceleration due to gravity, height of the liquid column above the hole. Here now all the things we are calculating now, मतलब range भी calculate करेंगे, maximum range भी calculate करेंगे. Okay, everything will calculate. Copied? and अगर rate of flow पूछ रहे तो you got velocity right, you got velocity right. Rate of flow पूछ रहे तो इस पॉइंट में how much, how to find the rate of flow at this point after getting the velocity? AV. AV खत्म. Area and velocity is nothing but the volume. Sir, volume flow. the height of it from the surface. हाँ, surface से hole का height, किधर भी hole बना. Suppose if a hole is made here bottom में, tell me what is h? Capital H. हाँ capital H, वो use करना पड़ेगा. That's very important. आपको under 2GH is the formula, toss it direct दे दिया, calculate by using Bernoulli's, मतलब here and here Bernoulli's apply करके we get this one under 2GH. Okay? Yes, sir. Now rate of flow पूछ रहे तो क्या है, simply area into velocity. मान लो the small hole का area is A and बड़ा का area is A, capital A. मानो on the video. हो गया?
चलो, so formula आ गया ना, V equal under root 2gh and rate of flow is area into velocity. Okay, करो. So can you go back and write the rate of flow formula? Area into velocity. So area into under root 2gh. Can you go to the slide before this also once? Yeah, okay, that I wrote. Next. Got it? Done right, वाला? Yeah, yeah. Okay. चलो करो. The level of water of a tank is 5 meters high. A whole area is cross section is made at the bottom of the tank. Bottom में hole बनाया. The rate of leakage of water from the hole. मतलब Q value is asking. Rate of flow is asking. Rate of leakage of water from a hole. So from what height is the hole made? Bottom of the tank है ना. ये height कौन सा tank कितना height है? Oh, okay. हाँ. So 10 power minus 3. देखेंगे. So area into the velocity under root 2gh. So use करो. So 10 power minus 3. 10 power minus 3, yeah. Yes, correct. Next. A small hole of area of cross section is present near the bottom of the fully filled open tank of height this much. Same thing, rate of flow of the liquid. Bottom में लगाया. Rate of flow of the liquid is so much. Units are, we should be very careful. इसमें that formula only, but units they will mix. So is that 2 millimeter square? Yeah. 2 millimeter square. So Millimeter what should we तो take you can value convert of root 40 as? approximate ले लो. Root 40 को simplify करो कितना आएगा? So you'll get 2 root 10, which is approximately 6 हाँ, 2 something. 10. That's it. Yeah. Sir, B. B या देखेंगे. So C. Okay. Mana should say. Area into velocity. Velocity आने के बाद area से multiply करने का to get the rate of flow. Oh, so C. F1 multiplied Oh. area again. Yeah. Awesome. So 1 second. Yeah, sir, B. I mean, sorry. 1 second. Area into velocity, right? Oh yeah, 4 into 4, yeah, 4 into 3, yeah, 12, yeah, correct. Yeah. चलो. Next one. Volume flows into larger tank with a flat bottom at the rate this much, and water is leaking out a whole area at the bottom.
सो वाटर, पानी ऐसा गिरता जा रहा है विथ 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब पर सेकंड, एंड इधर से निकलता जा रहा है. इफ द हाइट ऑफ द वाटर इन द टैंक रिमेन स्टडी, सो कितना एंटर हो रहा है उतना लीव हो रहा है. ओके, दैट्स व्हाई द वाटर विल बी स्टडी, राइट, एंड सेम. देन द हाइट इज, ये हाइट इज हाउ मच? सो रेट ऑफ फ्लो एंटरिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो लिविंग. यूज करो. So do you want height in Sir- meters? 10⁻⁻1. 10⁻⁻1 wrong. Say meters. No, wrong. Sir, 5 centimeter. Sir, do you want it centimeter or meter? 5 centimeters, right? Q of entering is equal to Q of leaving. और यूज करो. एंटरिंग का ऑलरेडी दे दिया ना, कितना Q एंटर हो रहा है 10⁻⁻⁴, एंड कितना लीव हो रहा है एरिया इंटू वेलोसिटी. वेलोसिटी का फॉर्मूला यू नो ऑलरेडी, यूज करो. √2gh बोल के हाइट क्यों करो. एरिया कितना दिया 10⁻⁻⁴, राइट. सब करो. 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻, एरिया कितना दिया 1 centimeter square, right? 1 into 10⁻⁻2 whole square, 10⁻⁴, into velocity is under 2gh. फाइंड करो. h फाइंड करो. h will get in meters, then substitute will get in centimeters. कितना है कृष्ण? Sir, 0.5 meters. Okay, that is 5 centimeters, right? आया मानो. Sir, 1 second. They are doing surface tension, huh, Krishna? Yeah, got Yeah, it. sir. 5. Okay. Krishna. A large open tank with 2 holes. Now, 2 holes. One is square hole of side L and depth y from the top, and other is circular hole of radius r and depth 4y. Diagram ड्रा करो. इधर एक स्क्वायर होल है, डेप्थ कितना है y में. इधर एक सर्कुलर होल है, उसका रेडियस इज r एंड डेप्थ इज 4y फ्रॉम सरफेस से. 4y. Okay. On the top. When the tank is completely filled with water, the quantities of water flowing per second from both the holes are same. So rate of flow is same in both the water में. Then radius of the circular is how much? So this point and this point में Q1 is equal to Q2. Now solve. Rate of flow is same in both में. Options will give. So the velocity is same, right? Oh no, never mind. कैसे सेम होगा? हाइट डिफरेंस रहेगा ना.
Sir, So I got L by root 2 pi. L by sir, same. Option A. is So on. I got root 2 L by pi. No, wrong. L by root 2 pi. A1 V1 is equal to A2 V2 लगाओ. So yeah, I got my mistake. बेटा. Yeah. चलो. Now we'll see the range. Range how to calculate range? आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत बार किया ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में जूम बोल के जाने समय क्या करने वाला है, वेलोसिटी इनटू टाइम यूज करने वाला है, खत्म. तो यूज करता आ जाएगा. मान लो वी आर यूजिंग दिस एस इक्वल यूटी प्लस हाफ स्क्वायर वाला वाई डायरेक्शन मोशन वी आर टेकिंग वाई डायरेक्शन मोशन. सो वाई इज इक्वल टू हाफ जी डी स्क्वायर. फ्रॉम दिस टाइम इज इक्वल टू अंडर 2 वाई बाई एच. वाई इज ब्रॉट फ्रॉम हियर टू हियर, नथिंग बट लास्ट में करेंगे h माइनस h, राइट. So vertical height कितना से vertically initial velocity is 0 and I'm applying s equal ut plus half d square. Substituting we got this one, half g square is equal to time is equal to under 2 y by g. Okay, now range क्या है, velocity in time, and velocity no, what is the velocity with which it is coming out? Torricelli's theorem, right? Under 2gh into time is under 2y by g. And from this if you cancel you get 2 under root h into y, and y के जगह में I'm substituting h plus h minus h. Then your answer is 2 under root h into h minus h is the range formula. Is the formula. 2 times of h into h minus h. On the videos for now. Two under root h into h minus h. That is easy to remember also. Under root ऊपर height into नीचे height का multiply करने का. 2 under root h into h minus h. So in this whole कभी भी हमारा range का value बोले तो ये formula directly you can use. And h is what, from surface. Always ऊपर small h is always from surface से, and ये वाला from bottom से whole तक distance. Yeah, done. 1 second. ये So होने what के does बाद एक small बार h and capital H represent? small h is from surface से the whole का distance, and capital H is total height, right? And from here to here the distance is capital H minus small h. So आपको simply 2 under root ऊपर का height into नीचे का height whole से. So sir, if the hole is at the bottom, won't it be 0? h minus h will be 0, right? पूरा 0 हो जाएगा. Yeah, we'll see that only. Next. हो गया? Okay, maximum range. You tell me maximum range कब होगा? Maximum range होने का कब होगा? Tell me. Generally maximum or minimum means we have to differentiate, right? Normally. ठीक है. This is the formula we got at 2 under root h into h minus h. Differentiate h with respect to r, right? R with respect to h से differentiating and equal to 0 करो. Because minima or maximum में we are trying to find differentiate करके 0 इसे equate करने का. After solving, you will get h equal to h by 2. You can able to hear? कंटेनर में बीच में एग्जैक्टली होल बनाया, द टाइम रेंज इज मैक्सिमम. एग्जैक्टली टोटल हाइट इज h, राइट? अगर सेंटर में मारूंगा, एग्जैक्ट सेंटर में मारूंगा, देन द पानी जो आ रहे हैं उसका रेंज इज सो हाई, उसका रेंज इज मैक्सिमम रेंज. एंड इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस h वैल्यू इन दिस, विल गेट, देखो विल गेट h आएगा. r max is h. कॉपी करो. The hole should be made half the height of the tank from the surface of the liquid to get the maximum range. And maximum range कितना होगा बोले तो, if you substitute h equal to h कितना होगा, you will get a h रहेगा. मतलब वो कितना हाइट है उतना रेंज will be that much only, उससे ज्यादा नहीं है. टैंक का कितना हाइट है, रेंज मैक्स is also that much height only.
So done. Yeah, no. Okay. ये भी ले लो. ये So पूरा once मत again, लिखो. it should be half. हाँ. So once go back to statement. So exactly half में अगर मैं होल बनाऊंगा कंटेनर में, इधर होल बनाए तो the range is maximum. वो इधर तक गिरेगा. Range is maximum. Yeah, so I wrote it. Okay. Now, if I substitute that value, we'll get R max H. Just पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, just R max H. So maximum range कितना हो, कंटेनर का हाइट कितना है, उतना maximum range होगा when you put a hole exactly center. Okay, चलो तो देखो ये करो. The water is coming out from the strikes the ground same point. Same point में strike किया means ranges are same both में. The height of the liquid column in the tank is पूरा height चाहिए. ये height चाहिए. Depth से ये height दिया and depth से ये height दिया. Two holes का height दिया surface से दिया. Range का equate करो. Both since both are falling at same point, ranges are same, right? R1 is equal to R2 करो. Sir, 10 centimeters. Yes. 10. 10 centimeters answer. Yeah. Yeah. Next. Time taken to empty the tank. ये भी important है. ये वाला understand करने का time last topic है. Time taken to empty the tank. Suppose मान लो you have a container. उसका area is capital है. Okay, पानी empty करने के लिए that hole should be where, tell me. Tank empty करने के लिए where should be the hole? Side में और bottom में ना? So anywhere. Bottom में. नहीं नहीं, anywhere कैसे पानी रहेगा ना? Bottom में रहने का. Then only इसका area A है. Then only empty हो सकते हैं. उसका time उसका time we are trying to find. Time taken to empty the tank. Very important. Empty करने के लिए only time taken. Okay, not normal time. So formula is A by small a under root 2h by g. ये यूज करना पड़ेगा. Capital A is the area of the bigger surface and small area is A. Okay, under root 2h by g. This is the time taken to empty the tank. So I can tell like this, time is proportional to root h. So लिखो T is what? लिखो नीचे. Time taken to empty from any height h. Time taken to empty from any height h. ठीक है? Very important. ये आने के बाद we have to do JEE mains questions. So many questions are there. Okay, हो गया? Done. ये टाइम वाला कौन सा है? टाइम टेकन टू एम्प्टी फ्रॉम एनी हाइट एच. ये एम्प्टी का टाइम करने वाला. if they tell the time पानी थोड़ा निकाला in time t1 means we should not use the time. ये वाला क्या है? एम्प्टी करने का वाला टाइम only we have to use this formula, right? चलो. So it is always proportional to root h. H is a full tank का. ना करो. A rectangular vessel when full of water takes 10 minutes to empty the through a orifice in the bottom. How much time it will take to empty when half filled with water? कितना time लगेगा half filled में? So H is height of water, right? Complete surface से bottom height. That should be converted करने into के लिए- seconds. Answer में minutes. 9753.
बॉटम में होल बनाया, ये हाइट है h एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट इज t1 मान लो, ये फुल हाइट h से ना, वो क्या बोला, हाफ पानी फिल हुआ तो h/2 हाइट में टाइम t2 लगा मान लो टू एम्प्टी द टैंक, दोनों टाइम एम्प्टी वाला टैंक, ऑलराइट, देन यू कैन यूज द फॉर्मूला t is proportional to root h, use the formula and solve. माना करो, Yes, 1 second. t is proportional to root h. So 7. देखना, Sir, I got 5√2. 5√2, 5√2 is how much approximately? Root 2 is 1.4, That's 1.4, yeah, 7. 7 is also आया. So t is proportional to root h यूज करके t1 t2 by t1 is equal to under root h1 by h2 करने का हो जाएगा. ओके, आया कृष्णा? Sir, 1 minute. Yes, sir. 7 minutes is answer. है करो. A tank is filled with a liquid up to a height h. Okay, completely fill किया है up to height h. A small hole is made at the bottom of the tank. Consider time t1 to the empty the first half of the tank. इधर से t1 height लगा, t1 time लगा to fill half of the tank. To empty half of the tank is h, मतलब half of the tank में t1 लगा. And t2 will be time taken to empty rest half of the tank. इधर से पूरा empty हो गया, time t2 लगा. Then determine the ratio of t1 by t2 is how much. On the video सब लोग. So I go to the washroom. Yeah. क्वेश्चन स्टूडेंट, इधर से हाफ एम्प्टी होने के लिए टाइम t1 लगा, उधर से 0 होने के लिए t2 लगा टाइम. So this is 0.414. देखेंगे. Fish are there on the video. 1 minute, sir. Yeah. देखो इधर से इधर तक वाला टाइम t1 है, इधर से इधर तक वाला टाइम t2 है. सो आपको क्या है फॉर्मूला, t is proportional to root h. So t1 by t2 is equal to h1 root h1 by h2. Okay, देखो ये टाइम we should not take. Why? I told you time taken to empty the tank वाला टाइम लेने का, not this whether it is emptying the tank का, this time we should not take. ये कितना टाइम लगा to empty the tank? To empty the tank कितना टाइम लगा? Tell me. That is t1 plus t2. Yeah. And from here to here empty वाला tank you should take t2, right? So
T1 is nothing but T1 plus T2 by T2 is proportional to under root. A total time कितना time लगा proportional to H1 by H2. H1 is how much? H, right? H by and कितना time लगा ये वाला H2. Now solve. T is proportional to root H. एक टोटल टाइम कितना लगा इधर से तक कितना एम्प्टी होने के कितना हाइट एम्प्टी हुआ h हाइट दैट्स व्हाई आई पुट एम्प्टी एट h इधर से इधर तक कितना हाइट एम्प्टी हुआ So 0.414. हां दिस आंसर There is integration. नॉट इंटीग्रेशन कुछ नहीं है सी आई एम टेलिंग वी आर यूजिंग दिस फार्मूला द टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक Yeah. इधर से इधर तक टाइम विच नॉट टेक इधर से इधर तक लेने का टोटल Yeah. टाइम इज एम्प्टी द टैंक सो दैट्स व्हाई T1 plus T2 लगाया एंड इधर से इधर तक कितना एम्प्टी हुआ मतलब T2 टाइम है ना T2 टाइम लगा दिया अंडर रूट कितना हाइट एम्प्टी हो गया इधर से इधर तक h एंड इधर से इधर तक कितना हाइट एम्प्टी हुआ h by 2 Okay. If we solve, Sir, you'll get I found instead of that, I found T1 and then I divided by T2. T1 कैसे फाइंड किया The total time is T1 plus T2. So total time I took. And then I minus T2 from that to get T1. हाँ And yeah then divided.